Good morning, dear students. Myself is Sumit. Today we'll be doing the first chapter, The Living Word. In the last lecture, we talk about the diversity in the living word, in which we talk about biodiversity, nomenclature, identification, and about ICBN and ICZN, and scientific or biological nomenclature, in which we read about the binomial system of nomenclature proposed by Sir Carolus Linnaeus, who is considered as the father of taxonomy. And what are the main points for the biological nomenclature? In today's lecture, we'll be talking about the classification system and taxonomy and systematics. Classification is the process by which many individuals is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. So, based on characters, we can classify each and every organism or individual into certain categories or certain taxa. And this system of placing organisms into different categories is known as classification. For example, if we are talking about potato belongs to plants. The family of potato is Solanaceae, and the genus of potato is Solanum, while the species of potato is Tuberosum. So there are certain rank of classifications which is known as taxonomic categories, and the lowest category of taxonomy is species, then genus, then family, and then order, class, phylum, and kingdom. Kingdom is the largest taxonomic rank, while species is the smallest taxonomic rank. So, by placing the organism into different taxonomic categories in a particular species, genus, family, order, class, phylum, and kingdom is basically the classification system. It is also known as a taxonomic hierarchy. So, classification of organisms is usually included in the branch of biology which is known as taxonomy. And what taxonomy is all about? Taxonomy is usually based on characteristics, and on the basis of many characters, all living organisms can be classified into different taxa, and this process of classification is taxonomy. So the simplest of definition of taxonomy is the science of classification. The scientific process of arranging things into groups is called taxonomy, and the term taxonomy is taken from a Greek word taxis and nomos. The meaning of taxis is arrangement, and nomos or nomia means method. So
The method of arrangement is known as taxonomy. Taxonomy is the science of naming. Naming means the scientific names, defining and classifying groups of biological organisms on the basis of shared characteristics. When we are or when we will, sorry, when we want to classify some animal or some plant into certain groups, we first consider the characters of the plant or animal or any other organism, and on behalf of the similar characters we can place the organism into a definite group or definite taxa. So taxonomy is basically the characterization, the identification, the classification, and the nomenclature. The process of characterization, identification, classification, and nomenclature is taxonomy. So, usually, taxonomy is regarded as the science of classification plus nomenclature on the basis of similar characters. Let me move into systematics. Systematics is usually the broad form of taxonomy. The word systematics is derived from a Latin word systema, which means systematic arrangement. So, systematic is the broad field of biology that studies the diversity of species. It governs the evolutionary history. One thing which is added in taxonomy is usually the evolutionary history which form the systematics and the phylogenetic relationship. Phylogeny means origin. So the relationship, phylogenetic relationship in addition to taxonomy is systematics. So what systematics is all about? Systematics is usually taxonomy plus phylogeny. So taxonomy is taxonomy is identification on the basis of similar characters, classification, nomenclature, and classification system. Somehow it include the identification, nomenclature, classification, and description. While systematics include all these: identification, nomenclature, classification, description, and evolution or phylogeny. So, systematics is usually a broad term. While we want to understand the taxonomy, let me think that if there is no classification system, what will happen? Let us suppose
The earth is not divided into continents, countries, state, etc. और इस पूरी अर्थ में लेट वी हैव टू फाइंड समवन लाइक मी, किसी आदमी को मुझे ढूंढना है इस अर्थ में। और ये अर्थ जो है वो क्लास, उसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं हुआ है, यानी कि अर्थ के कोई अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो नहीं है। ये पूरी एक कंप्लीट अर्थ है और ये कंटिनेंट्स में डिवाइड नहीं हुई है। देयर इज नो एशिया, देयर इज नो अफ्रीका, देयर इज नो अमेरिका। सो एक किसी इंडिविजुअल के लिए किसी को सर्च करना कितना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप कहेंगे कि अगर इस पूरे अर्थ में सुमित जोशी को ढूंढना है तो सुमित जोशी कहाँ है भाई, अर्थ में है, कहाँ ढूंढेंगे। तो इसी बात के लिए एक क्लासिफिकेशन सिस्टम का यूज किया गया। सबसे पहला काम ये किया गया कि अर्थ को 7 कंटिनेंट्स में डिवाइड कर दिया गया। किस लिए? ताकि स्टडी जो है वो आसान हो जाए। एंड देन अब थोड़ा सा आसानी हो गई है। अब कहा कि अगर मुझे ढूंढना है तो सुमित जोशी को आप एशिया में ढूंढिए। लेट अस सपोज दिस वन इज एशिया। तो अब हम आ गए एशिया में, किसको ढूंढने के लिए मुझे। लेकिन एशिया भी बहुत बड़ा है, एशिया में भी मुझे ढूंढना पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा है। तो यहाँ से हमने पहले कंटिनेंट्स बने, कंटिनेंट्स को और क्लासीफाई किया। अब कंटिनेंट्स को क्लासीफाई करके हमने क्या बना दिए, कंट्रीज बना दी। अब मैं आ गया यहाँ से इंडिया में, कहा कि भाई इंडिया में, इंडिया भी काफ़ी बड़ा है, मुझे इंडिया में कहाँ ढूंढते। इसको थोड़ा और क्लासीफाई किया तो स्टेट बनाए। अब आ गए उत्तराखंड में, उत्तराखंड भी काफ़ी बड़ा है, यहाँ भी मुझे कैसे ढूंढते। देन इसको और क्लासीफाई किया गया और उत्तराखंड से आ गए अल्मोड़ा में। देन अल्मोड़ा भी काफ़ी बड़ा है, सो ऑन। तो जो मेरा मोहल्ला है वहाँ आए एंड फाइनली मुझ तक पहुँच गए। तो ये एक प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम या टैक्सोनोमिक कैटेगरीज या टैक्सोनोमिक हायरार्की। तो ये हायरार्की में हमेशा सिंपल कैरेक्टर से हम कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स की ओर जाते हैं और फाइनली ये एंड होती है स्पीसीज पे। द स्पीसीज इज मी। नाउ दिस इज स्पीसीज, दिस इज जेनरा, एंड this one is the family, this one is the order, and then after order this one is the phylum and this one is the kingdom. So इसी तरीके से किंगडम से शुरू होते हुए फाइनली हम आएंगे स्पीसीज तक, और इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को हम नाम दे देंगे टैक्सोनोमिक हायरार्की, विच इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो आज के टॉपिक में हम इतनी ही बात करते हैं। वन मोर थिंग, जब भी कोई साइंटिफिक नेम लिखा होगा, लेट अस सपोज कल हमने बात की थी कि मेंजीफेरा इंडिका इज द बॉटनिकल नेम ऑफ मैंगो, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो प्लांट। तो मेंजीफेरा इंडिका ये बाइनोमियल सिस्टम है। द फर्स्ट नेम इंडिकेट्स द जेनरा while the second name indicate the species. समटाइम्स आपको ये दिखेगा कि एक वर्ड और इसके पीछे दिखेगा, जैसे मेंजीफेरा इंडिका एंड इसके पीछे आपको LINN डॉट ऐसा भी दिखेगा। सो दिस नेम, द थर्ड वन, इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट और टैक्सोनोमिस्ट। ये टैक्सोनोमिस्ट का नेम है जिसने इस नेम को सबसे पहले रखा था। लिन मीन्स लीनियस। अगर ये LINN डॉट है तो लीनियस ने इंडिविजुअली इसे किया होगा, और कई बार इसमें L डॉट आ जाएगा तो इसमें लीनियस प्लस कोवर्कर्स भी साथ में होंगे। ठीक है ना। तो ये नेम इसको इंडिकेट करता है। एक ट्राइनोमियल सिस्टम भी होता है। ट्राइनोमियल सिस्टम में दिस वन इज द बाइनोमियल सिस्टम,
पहला नेम जेनरा, दूसरी नेम स्पीसीज और तीसरी नेम इसमें सब स्पीसीज को भी इंक्लूड कर दिया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।